So hello and welcome back to our thermodynamics series and today we are going to start with enthalpy of the system. So जैसे कि हमने लास्ट टाइम कवर अप कर लिया है अभी तक जो हमने देखा हुआ है फर्स्ट वी सॉ व्हाट इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर दैट इज हमने देखा व्हाट इज सिस्टम सराउंडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम एंड सो ऑन. फिर उसके बाद में हमने देखा एक इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी व्हिच वाज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी व्हिच वाज रिप्रेजेंटेड बाय यू. और उसके बाद में हमने डेरिवेशन देखा इंटरनल एनर्जी का. आफ्टर दैट वी सॉ व्हाट डू वी मीन बाय वर्क डन. फिर अगेन वर्क डन का वी हैड सीन three different type of a work done, that is in reversible process, irreversible process and also in vacuum. Now today we are going to start with our next topic which is called as enthalpy. So पहले इसको लिख लेते हैं हम, like let's say enthalpy and this is represented by capital H. So जैसा कि हमने लास्ट टाइम ऑलरेडी देखा हुआ है that U अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें so that is delta U, it is written as Q minus P delta V. ठीक है. नाउ लेट्स से इफ यू टेक दिस होल थिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पर ले लेते हैं सो हियर वी कैन से लेट्स से लाइक U2 minus U1 is nothing but at QV minus P external and then delta V will be there and this should be QP and this is our internal energy equation with respect at constant pressure P. ठीक है. Now same thing if you rearrange it, so here we can say it as that QP is equal to delta U और ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे so it will become plus P external delta V and this term is our nothing but enthalpy because here we can write since QP जो QP जो होता है that is heat at constant pressure, here it is same as the heat content of the system and heat content of the system is represented by H and which is called as enthalpy of the system. So here we can use since ऊपर वाला जो हमारा इक्वेशन है वो डिफरेंस का है डेल्टा U लिया हुआ है उसमें so definitely यहाँ पर जो हमारा QP होगा that is called as delta H and delta H is nothing but the heat content of the system at constant pressure. So here जैसे हम ये वाला एक रिलेशन ले लेते हैं that QP is equal to delta H. So our above equation, this equation will now change into like delta H is equal to delta U plus P delta V. Okay. Now this is the equation for our enthalpy of the system. That is change in enthalpy of a system is given by change in internal energy plus work done on or by the system. Okay. Now the same thing we know that here we can say let's say according to ideal gas equation हम ये same equation को we can write it in another form also जैसे कि let's say we can say by ideal gas equation we can say that PV is equal to nRT. So definitely PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to N2RT. So if you take P delta V, so therefore P delta V is nothing but delta, here we can put and then nRT and we know here the number of moles is only getting changed so it should be delta N and then multiplied by R and D. So can we say like P delta V can also be replaced by delta nRT. So our second equation of delta H should also be equal to delta U plus delta nRT. So these are our two equations that we can write for change in enthalpy of the system. That is first here हम लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं the delta H is equal to delta U plus P delta V and second here we can write it as delta H is equal to delta U plus delta nRT. So here we can write it as note point as कि whenever an equation is given, कोई भी आपको अगर chemical equation दिया हुआ है और उसमें अगर आपको delta H find out करने कह रहे हैं so at that time we can use delta nRT. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं delta nRT is useful to find delta H when chemical reaction is used. So in this case we can use our delta nRT formula. For example chemical reaction used in the sense let's say अगर आपको एक ऐसा equation है like C plus O2 is giving you CO2. So in this case we have to use our delta nRT formula, then only we will get our work done equation. That is delta nRT आप लोगे तो ही जाकर के हम delta H that is enthalpy हम find out कर पाएंगे. So again one of the very important, it is a state function जैसे कि delta U था. Again one of the very important state function which is delta H enthalpy of the system.
सो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विच इज नथिंग बट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. सो लेट्स से हियर वी कैन से लेट्स से प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. यहाँ पर हम सिस्टम के जो प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम दो टाइप में वी कैन कैटेगराइज इट. वन इज कॉल्ड एज लेट्स से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अदर इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है. नाउ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर द वंस which depends on the quantity of matter taken, on the quantity of matter taken to take the observation of the system. अब इसका एग्जांपल वी कैन टेक इट एज मास. ठीक है. सो मास हो गया, देन वी कैन टेक इट एज वॉल्यूम. So these are the quantity which depend upon the quantity of matter taken. So इसके अलावा भी we can take some other example as heat capacity, then internal energy, enthalpy and so on. So let's say यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ. Let's say internal energy, then enthalpy, heat capacity that is represented by capital C, etc. ठीक है. सो दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. मीन्स अगर ये सब चीजों को हम मेजर करेंगे सो इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर टेकन. मीन्स अगर लेट्स से आप 1 kg के लिए कुछ वॉल्यूम मेजर करते हो एंड यू आर मेजरिंग योर वॉल्यूम लेट्स से 10 kg, सो उस केस में इट विल बी डिफरेंट. एंथैल्पी अगर आप 1 kg और 10 kg के लिए मेजर करते हो इट विल बी डिफरेंट एंड सो ऑन. ठीक है. सो क्वांटिटी ऑफ मैटर टेकन पे वो डिपेंड करेगा. और उसी का ऑपोजिट अगर हम देखेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सो हियर वी कैन से properties of a system which is independent on the quantity of matter taken. ठीक है. सो हियर वी कैन से, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट. यहाँ पर आप देख सकते हो आई एन इंडिपेंडेंट एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी दिस आई एन. तो यहाँ लर्न करने के लिए वी कैन यूज दिस थिंग आई एन दैट इज इंडिपेंडेंट एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एंड इसका एग्जाम्पल वी कैन टेक इट एज कि लेट्स से जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, देन वी हैव मेल्टिंग पॉइंट, देन वी हैव सरफेस टेंशन, वी कैन यूज विस्कोसिटी एंड सो ऑन. विस्कोसिटी ओके फाइन एंड सो ऑन. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं लाइक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल लेट्स से वाटर. सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस. इट डजंट मैटर कि हम अगर 1 लीटर पानी लेते हैं और वी आर टेकिंग लेट्स से 5 लीटर ऑफ वाटर, बोथ द थिंग्स लाइक 1 लीटर and 5 लीटर बोथ विल बॉइल एट 100 degrees Celsius. So this is the quantity which is independent of a quantity of matter taken, and hence it is called as intensive property which is independent of the matter taken. ठीक है. So I hope you have understand the difference between the extensive property and the intensive property. बहुत ही छोटा सा difference है और इसको learn भी हम कर सकते हैं. Intensive is always independent of matter and extensive is always dependent on the matter taken. ठीक है. So the next topic which we are going to cover here is the heat capacity. So let's say पहले तो हम इसका heading लिख लेते हैं यहाँ पर heat capacity and this is given by is denoted by capital letter C. So let's see heat capacity. So यहाँ पर heat capacity let's say अगर हमारे पास कोई एक system है so उसमें definitely heat either it will be absorbed by the system or heat will be released from the system. ठीक है. या तो हीट अंदर आएगा सिस्टम के या तो सिस्टम के बाहर हीट हमारा जाएगा. ठीक है. अब ये मेजर करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू हीट कैपेसिटी वी कैन हैव दिस मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू C, that is heat capacity of the system into the change in temperature. ठीक है. So this is our mathematical expression which we can use. The amount of a heat exchange between the system and the surrounding is equal to C, that is heat capacity of the system into the change in temperature of the system. And let's say if we'll write in terms of this is called as molar heat capacity. This is let's say हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ये है हमारा molar heat capacity. Definition of C or molar heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius for 1 mole of substances. ठीक है. And delta T is nothing but हमारा change in temperature हो जाएगा. Now let's say अगर हम यही चीज को that is molar heat capacity को अगर हमने specific heat capacity that is in terms of
पर्टिकुलर कोई भी एक रैंडम वेट होगा उसके लिए अगर हमने लिखा, सो योर इट विल बी रिटन एज Q इज इक्वल टू C स्मॉल c इंटू M इंटू डेल्टा T, वेर हियर दिस स्मॉल c इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और इसी को अगर हमने मास से मल्टीप्लाई करते हैं, सो दैट विल गिव यू मोलार मास से अगर हम इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दैट विल गिव यू मोलार हीट कैपेसिटी, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल सी एंड कैपिटल सी इज नथिंग बट ऊपर वाला जो हमारा कैपिटल सी है दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी, एक मोल के लिए जो भी हमारा हीट कैपेसिटी होगा कैपिटल सी होगा, एंड अगर हम स्मॉल सी लिखते हैं सो दैट इज फॉर रैंडम गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंसेस, ठीक है। इट कैन बी फॉर 1 ग्राम, इट कैन बी फॉर 10 ग्राम, इट कैन बी फॉर 100 ग्राम, जो भी एम का वैल्यू हमारा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा और सिस्टम का हीट कैपेसिटी स्मॉल सी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। So as we had seen, this Q is equal to C into delta T, capital C into delta T, and small q is equal to C into M into delta T. That is specific heat capacity into mass into delta T. Now here we can do the comparison between the CP and CV. So let's first write, let's say if we're writing in terms of, let's write in this manner that at constant pressure, here we can say that जो हमारा इक्वेशन है that QP will be equal to CP into delta T, and actually अगर आप देखेंगे so QP we had already seen in enthalpy, this is equal to actually delta H. Similarly we can say at constant volume, here we can say that जो Q होगा that will now become as QV, and this is actually equal to Cv into delta T, and at constant volume this QV is nothing but delta U of the system, ठीक है। So अब जैसे ही हमको delta H मिल गया, we have got delta U, now what we can do is we can take the difference between these two, ठीक है। सो एक बार इनको इन दोनों का एक बार डिफरेंस लेकर के देखते हैं कि क्या होगा हमारा वैल्यू। सो हियर वी कैन राइट, let's say for 1 mole, for 1 mole, ठीक है, that is delta n is equal to 1, ठीक है। so here we can write enthalpy का equation, that is enthalpy is equal to delta u plus delta nRT, but हमको पता है कि delta n में n का जो वैल्यू है it is 1, so let's say delta r into t, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं q p is equal to q v and plus delta, ये r लिख लेते हैं and delta t, and let's write the values of qp and qv. So here we can say, let's say cp into delta t is equal to cv into delta t, which is equal to r delta t. So we can cancel this delta t from all sides. Oh, this should be plus actually, ठीक है, and delta t सारा cancel हो जाएगा. Now we can get like cp equal to cv into cv plus r, and here we can represent the same thing as cp minus cv is nothing but universal gas constant r. So this should be our relationship between cp and cv, ठीक है, and this is how we can get the relation. So Cp minus Cv is equal to our R, which is universal gas constant. So this is a very small derivation indicating the relationship between Cp and Cv, and which is actually Cp minus Cv is equal to R. ठीक है. So with this we had finished one of the very important topic of thermodynamics, that is the application of our first law of thermodynamics. ठीक है. Now let's quickly move to our next section, which is the enthalpies of different type of a reaction. पहले इस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, which is nothing but reaction enthalpy, and we can have like different type of a reaction enthalpy, and again it is represented by delta H only, ठीक है। So यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं that here we will see many different type of enthalpy, जिसका हम सिर्फ definition देखेंगे, which you can read from your NCERT textbook और state level textbook, ठीक है। एंड जहां भी हमको लगेगा कि फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, सो देयर वी विल राइट इट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। यहाँ पर जो है हम फर्स्ट वाला लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, क्या डेल्टा एच, और इन बिटवीन इफ यू आर राइटिंग आर, सो दैट रिप्रेजेंट दैट दिस इज द एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, एंड इट इज नथिंग बट द सम ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच ऑफ ऑल द प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच, दैट इज सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑल द रिएक्टेंट, ठीक है।
So in this manner, we can write the enthalpy of chemical reaction or enthalpy of a reaction. So delta H or delta R of H is equal to sum of enthalpy of a product minus sum of enthalpy of all the reactants. Okay? And similarly, if you write like standard enthalpy of the reaction, so it should be summation. Here we can write like delta H naught of product and minus of summation of delta H naught of reactant. Okay. So in this manner, we can write like standard enthalpy of a reaction also. Now let's see, apart from our enthalpy of a reaction, what do we had? So for next is our enthalpy of fusion. So enthalpy of fusion is nothing but here we can say it is the enthalpy of a reaction when 1 mole of a solid is converted into its liquid form. So here we can say when a solid is converted into liquid. So ये केस में जो भी हमारा हीट का एक्सचेंज होगा, एंथैल्पी का एक्सचेंज होगा, दैट इज गिवन बाय डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन. Similarly, अगर हम solid से liquid जा रहे हैं, also we can go from liquid to gas also, and that is called as vaporization process. So here it will be enthalpy of vaporization. So enthalpy of vaporization is when a liquid, 1 mole of a liquid is converted into its gaseous form. So that is called as enthalpy of vaporization. And we can have like one more type where it is called as sublimation. Delta H of sub, and this is actually solid directly converting into the gas form, and this we can see in case of camphor. This we can see in case of iodine. कि iodine को आप जैसे ही burn करोगे, it is in solid form, but as soon as you will heat it, वो directly convert हो जाएगा into gaseous form. बिना convert हुए liquid में it will directly convert into gaseous form. So this is our like top 4 type of enthalpies. अब इनके अलावा भी we have different type of enthalpy. Now let's see enthalpy of formation. Let's say delta FOR, and here we can say H. So enthalpy of formation is, here we can say formation of a product from reactant also in the standard form. Let's say formation of a product from a reactant in standard form. That means let's say अगर हमको water molecule बनाना है, so water molecule natural state is nothing but a liquid, और अगर उसको हम बनाएंगे, so it will be formed from hydrogen when combined with half oxygen. Both should be in gaseous state, means hydrogen gaseous state, oxygen gaseous state. It will form liquid in it will form water in liquid state. So this will be the enthalpy of formation. Okay, means all the things should be present in their standard form, that is hydrogen, oxygen should be in gaseous form, और जो water form होगा that should be in the liquid form, and that is called as standard enthalpy of formation. Of course, जब भी हम standard की बात करेंगे, so here we can use this delta H naught for symbol. So that will be the enthalpy of formation. So now let's see our next type of enthalpy, and here it is called as enthalpy of atomization. So यहाँ पर हम लिख सकते हैं delta H ATM, that is atomization. यहाँ पर हम लिख सकते हैं delta H naught should be there, that is standard enthalpy of atomization. और इसका अगेन फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, atomization means formation of atom from the natural or the naturally occurring molecules. For example, let's say hydrogen atom अगर हमको फॉर्म करना है, so the source should be H2 molecule. जो भी अमाउंट ऑफ एंथैल्पी लगेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, so that is called as enthalpy of atomization. So here we can say when H2 is heated or it is broken, bond is broken, so it will give you 2 atoms of hydrogen, and this is called as enthalpy of atomization. ठीक है. So now next one is enthalpy of combustion, and it is written as COMB, and again delta H naught. So here we can say that combustion is nothing but the burning of anything in presence of oxygen is called as combustion reaction. और इस पूरे reaction में जो combustion reaction उसमें जो भी enthalpy का exchange होगा, it is called as enthalpy of combustion. ठीक है. So here we can say, let's say carbon plus oxygen is burning together, so it will give you CO2. So that is nothing but enthalpy of combustion. Then methane CH4 plus O2 will give you CO2 plus 2H2O. So that is again enthalpy of combustion. So whenever there is a reaction which is any substances, for example it can be carbon, it can be methane, it can be anything, when reacted with oxygen, और इस केस में जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा, along with that we will have some kind of enthalpy also. So enthalpy of combustion can be said as the amount of a heat released when 1 mole of a substance is heated
with oxygen. This is our enthalpy of combustion. And also we can have, like, let's say one more, which is enthalpy of solution. Enthalpy of solution. So enthalpy of solution is defined as the enthalpy exchange when 1 mole of a solute is added to a specific amount of a solvent at, of course, at standard pressure and temperature. Okay? So these are our total 8 type of enthalpies which will be defining our different type of chemical reactions. ठीक है. अब इसके बाद इसमें से अगर हम देखेंगे, सो देर आर फ्यू ऑफ द एंथैल्पीज विच आर इंपॉर्टेंट. जैसे कि फर्स्ट वाला एंथैल्पी, दिस वन इज इंपॉर्टेंट. देन वी कैन सी आवर कंबशन प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सब आगे बहुत काम आने वाले हैं. सो या दीज थ्री ओनली. फ्यूजन अप टू सर्टेन एक्सटेंट, बट या लेट्स मार्क दीज थ्री ओनली कि ये तीन एंथैल्पी जो है, दैट इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ये तीनों एंथैल्पी दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये हमको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देखने मिलेंगे. So let's start with our new topic, which is Hass's law. So let's first write the heading of this topic, which is nothing but Hass's law. So it states that, let's say हम पहले एक example ले लेते हैं कि let's say we have a reaction A which is giving a product B. ठीक है. Now this B is also giving a product C, and this C is again giving you a product D. So this is the chain of a reaction which is happening from A, starting from A, going to B, then going to C, and finally going back to the state D. Now let's say we have another process जिसमें हमको directly A जो हमारा initial reactant है and D which is our final product. तो इन दोनों में ये directly A से D में हमको पहुंचने में मदद करेगा. So let's say we have another step जिसको हमने red arrow से mark किया हुआ है, which is directly giving from directly converting from state A to state D. तो here we can say, let's number इसको हम कर देते हैं H1 फर्स्ट स्टेप के लिए, H2 एंथैल्पी ऑफ सेकंड स्टेप, एंथैल्पी ऑफ थर्ड स्टेप, एंड लेट्स से क्योंकि ये एक ही स्टेप में आ रहा है, सो लेट्स से दिस इज एंथैल्पी ऑफ आवर फोर्थ डिफरेंट पाथ. ठीक है. नाउ हियर व्हाट Hass's law स्टेट इज कि इट डज नॉट मैटर कि what path you have taken to reach from the initial state, that is A, to the final state, that is D, enthalpy of a reaction is always constant. इसका मतलब आप अगर A से D के लिए अगर आप सिंगल वन स्टेप वाला पाथ चूज करते हो या आप मल्टीपल स्टेप वाला पाथ चूज करते हो, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं A to B, B to C एंड देन C to D, तीन स्टेप वाला पाथ है, और एक हमारे पास A to D एक स्टेप वाला पाथ है, the enthalpy is always going to be the same. So here we can say, according to Hass's law, H4, that is enthalpy in a single step, is equal to sum of enthalpies of all such step or all such intermediate step. So here we can say, according to Hass's law, the enthalpy of a reaction in a single step is equal to enthalpy of a reaction in a series of steps. जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, H4 is equal to H1 plus H2 plus H3. Of course, you can write it as in terms of delta H also. So delta अगर हम चारों जगह mention कर लेंगे, so here we can say delta H4 is nothing but delta H1 plus delta H2 plus delta H3. Yep. So this is our Hass's law. So अगर इसका statement लिखना है, so we can write it. Let's say enthalpy of a reaction is always same whether the reaction takes place in one step or in a series of step. और यहाँ पर हम उसको देख भी सकते हैं, the delta H4 is nothing but delta H1 plus delta H2 plus delta H3. So let's take one example here. So यहाँ पर हम example ले सकते हैं, formation of carbon dioxide. So एक अगर हम simple step लिखे like C plus O2 is giving you CO2, और इसका अगर हम delta H लिखें, so it will be minus 383 kilojoule. ठीक है. So this will be the enthalpy of our kilojoule per mole. Enthalpy of a single step reaction, that is formation of CO2. Let's say the same thing if you write in terms of first carbon is added with half oxygen is giving you carbon monoxide. Here delta H
is minus 110.5 kilojoule per mole. And let's say same thing, agar monoxide is added with half O2, so it will give you carbon dioxide, and your delta H will be minus 282.5 kilojoule per mole. ठीक है, so this will be our delta H का reaction, या minus 282.5 और it can be minus 283 also. सो जो हमारा फाइनल वैल्यू माइनस 383.5 हो जाएगा. ठीक है, सो इन दिस मैनर हियर वी कैन से दैट डेल्टा एच, लेट्स से इसको हम H1 ले लेते हैं, H2 ले लेते हैं. सो हियर वी कैन से दैट डेल्टा H दैट इज इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. So this proves our Hass's law that if the reaction is occurring in a single step, जैसे कि CO2 का formation हम देख सकते हैं minus 383 kilojoule per mole, it is actually equal to sum of the two steps for formation of CO2. It should be CO2. Yeah. ठीक है. So in this manner, this is our Hass's law. Now let's move to our next topic of the chapter. So let's see over this topic which is called as the bond enthalpy of the reaction. So let's say पहले तो topic का नाम लिख लेते हैं, bond enthalpy of the reaction. ठीक है. So bond enthalpy in the sense इसमें हमको जो भी delta H that is enthalpy of a reaction निकालना है, that we have to find with respect to chemical bond, that is either by breaking of bond or by making of bond. So let's first write the formula, that is bond enthalpy delta H, or standard bond enthalpy delta H naught is nothing but summation of delta H naught of all the reactant, yes, it is summation of all the reactants minus summation of delta H naught of all the products. ठीक है. So in this manner we can calculate the delta H naught of the reaction with respect to bond enthalpy. अब आपको सिर्फ एक यही सिंगल इक्वेशन मिलेगा जिसमें ऑलवेज इट इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट. ठीक है, सो ये हो गया. अब इसका एग्जांपल एक्चुअली अगर हम देखें तो होता क्या है. सो लेट्स से कि इफ यू हैव एनीथिंग, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव टू फॉर्म मीथेन. सो लेट्स से मीथेन हमको कैसे मिलेगा, इट विल बी C प्लस 2 टाइम्स ऑफ H2 व्हेन कंबाइंड टुगेदर इट विल फॉर्म CH4. ठीक है, अब ये रिएक्शन के लिए लेट्स से डेल्टा H we have to find it out, and यहाँ पर हमको दिया हुआ है that given data here it will be, let's say one hydrogen bond, let's say first data is hydrogen bond is let's say 100 kilojoule per mole. ठीक है, then we are saying let's say carbon hydrogen bond is 150 kilojoule per mole, and then they are asking what is delta H for this complete reaction. Now अगर आप ये पूरे reaction को वापस से हम rearrange करेंगे, let's write this into the form of solution. So here we can say carbon plus 2 times of hydrogen bond is there, which is actually giving, अगर आप देखोगे methane, so methane का structure is, let's write here methane structure. Methane is like carbon is attached with 4 hydrogen. ठीक है, सो कैन वी से हियर मीथेन के लिए वी कैन राइट 4 टाइम्स ऑफ CH बॉन्ड. करेक्ट है. तो अब ये इक्वेशन के लिए वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन. सो डेल्टा H का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर. सो लेट्स से डेल्टा H और H नॉट जो भी हमको दिया होगा वैल्यू. सो डेल्टा H हियर इट इज इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि कार्बन मोनोएटॉमिक है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन का बॉन्ड इट इज 100, फिर माइनस समेशन, let's keep this here in this manner, and यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, इसको निकाल देते हैं. या सो माइनस 4 टाइम्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज 150 किलोजूल पर मोल. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल गिव यू 2 into 100 which is 200 and minus 4 into 150 which is nothing but 600. So this will give you delta H as minus 400 kilojoule per mole. ठीक है, सो इन दिस मैनर बस जस्ट बाय सिंपली लुकिंग एट द वैल्यूज ऑफ अ बॉन्ड, उससे हमको डायरेक्टली एंथैल्पी ऑफ अ कंप्लीट रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, सो वेरी सिंपल एंड ए वेरी स्वीट टॉपिक, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन विच कैन बी कैलकुलेटेड with the help of a bond energy of each molecule and or of each reactant and product. ठीक है,
So with this, we had finished another section, very important section, which was enthalpy and types of enthalpy. जिसके अंदर हमने दो important section देखे, सब section देखे actually, which was nothing but Hass's law and then bond enthalpy of the reaction. इसके अलावा भी we had seen this definition of all kind of enthalpies, in which we had marked three important enthalpies. That was enthalpy of reaction, enthalpy of formation and enthalpy of combustion. हमारे पास लास्ट के दो सेक्शन रह गए हैं. That is one we will cover entropy, and in last section we will cover Gibbs free energy. So let's see to it one by one. So let's start with our topic, which is called as entropy. So पहले हम यहाँ पर heading डाल देते हैं like entropy, and it is denoted by capital S. Now let's see what do you mean by entropy. So let's say, as we know that there are very common three states of matter, which is solid, liquid and gases. तो यहाँ पर हम तीनों physical state बना लेते हैं. Let's say we have this as solid, this is our liquid state and this is our gas state. Let's write here solid, then liquid and then gas. ठीक है. अब solid में if you'll see the constituent particle, they are very closely arranged to each other, and वही अगर हम liquid लेंगे, so there will be certain distances between the particles, and in gases the distance will be the maximum, like the distance between the two neighboring particle will be the maximum if you'll compare these three states. Okay, so now if you'll traverse from solid to liquid, let's say solid to liquid and liquid to gas, so here we can see the distance between the particle is increasing, और इसी को जो हम measure करते हैं, this term is called as entropy. So in short we can say entropy or S is the measure of, it is the measure of randomness. What it is called? Randomness means, or it is called, or let's say disordered. Yeah. So entropy is nothing but the measure of randomness or a disorder in a particular substance. जैसे कि अगर हम solid की बात करें, so solid में सबसे कम disorder होगा या उसमें particles are highly compact in nature, मतलब उसके particle easily move नहीं कर पाते. वही अगर हम liquid को compare करेंगे with solid, so definitely liquid में जो particles होते हैं वो थोड़ा सा move कर सकते हैं as compared to solid. So इसमें थोड़ा सा disorderness ज्यादा होगा और randomness will be more with the particle as compared to solid. और उसी के that if we'll compare gaseous state like liquid and gases, so gases will have more random or more moving state as compared to solid or liquid. So can we say here, when we are moving from solid to liquid to gas, so the entropy is increasing and hence it will be positive. So here also it will be positive. So here we can see when we are moving from solid to liquid to gas, the entropy of the system will keep on increasing. We can come in reverse manner also. Let's say अगर हम reverse track back करते हैं इसको, कि now we are coming from gas to liquid, so ये केस में if you see gases are having more entropy or more randomness and liquid के पास randomness या movement थोड़ा सा कम है. So definitely हमारा movement कम हो रहा है from gas to liquid, so here the entropy will be negative. And similarly अगर हम liquid से gas के liquid से solid particles और solid substances में आते हैं, तो ये केस में the particles like solid particles are not able to move. So definitely our entropy is further decreasing. So here also it will be negative S. So in this manner we can have a comparison between three states of matter, solid, liquid and gases, and we can see कि जब हम solid से liquid से gas में move करेंगे, entropy will increase, and when you are coming back, that is gas to liquids to solid, so the entropy will keep on decreasing. ठीक है. अब एंट्रोपी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि होता क्या है. सो एंट्रोपी जस्ट लाइक हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में, दैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द सिस्टम पार्ट. सो सिमिलरली वी कैन डिवाइड अवर एंट्रोपी आल्सो इनटू टू पार्ट्स. एक होगा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और दूसरा होगा एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, विच विल गिव यू एंट्रोपी टोटल. सो लेट्स राइट हियर एस टोटल, that is entropy of the universe is actually entropy of system plus entropy of surrounding. ठीक है. So this will be our like mathematical expression लिख सकते हैं overall entropy of the universe, which is system entropy plus surrounding entropy. Now it was seen mathematically कि let's say अगर आपको solid से liquid में move करना है और liquid से gas में move करना है, definitely you require some heat energy, because let's say हम ice ले लेते हैं, और you can take any other physical state also, कोई भी आप metal ले लो, उसको जैसे आप heat provide करोगे Q,
दैट इज रिप्रेजेंटेशन और सिंबल ऑफ हीट. स्मॉल क्यू जब जैसे हम प्रोवाइड करेंगे पर्टिकुलर सब्सटेंस को, सो इट विल चेंज इट्स फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑल्सो. सो कैन वी से अवर एंट्रोपी, यहां पर हम लिख लेते हैं एस डिपेंड्स ऑन क्यू, दैट इज हीट. यहां पे हम लिख सकते हैं हीट. अनदर टर्म दैट एक ये भी कंसेप्ट है कि लेट्स से अगर हम किसी भी सब्सटेंस को, एक ही सब्सटेंस, जैसे लेट्स से हम आयन का एक मेटल ले लेते हैं, आयन का हमारे पास एक पीस है, उसको हमने रूम टेम्परेचर पे हीट किया एंड देन वी आर टेकिंग इट टू लेट्स से 400 डिग्री सेल्सियस. सो दिस विल हैव मोर रैंडमनेस एट 400 डिग्री सेल्सियस बिकॉज उसका स्टार्टिंग पॉइंट लेट्स से 25 डिग्री से स्टार्ट हुआ है एज कंपेयर टू द आयन मेटल पीस विच वॉज स्टार्टेड एट लेट्स से 80 डिग्री सेल्सियस. सो अगर 80 से हम 400 पे लेकर जा रहे हैं तो उसमें कंपैरेटिवली प्रीवियस वन के हिसाब से थोड़ा सा रैंडमनेस कम होगा. So this was the concept. Again, it was explained and then it was proved. So that led to this thing that entropy depends on heat and it also depends upon our temperature taken. अब क्योंकि एंट्रोपी हीट पे भी डिपेंड करता है, दैट इज क्यू, एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, दैट इज टी. सो नाउ वी कैन हैव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ एस इज इक्वल टू दैट इज क्यू अपॉन टी. So this is our mathematical expression for entropy of the system as well as for surrounding also. That same equation will come. Similarly, if you want to calculate the change in entropy, that is delta S, here we can write it as Q in a reversible process upon T. So this will become our formula for the entropy of the system. Okay? And here we can write it as a node point also. Here it is said that entropy, total entropy is always greater than 0 for a spontaneous process. So ऐसे कोई भी प्रोसेस जो नेचुरली खुद से ही होंगे, दे विल अकर ऑन देयर ओन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स और विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंट. सो दैट इज कॉल्ड ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वाटर फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट. So that is a spontaneous process. Then melting of ice is a spontaneous process. Means इसमें हम कुछ भी involvement नहीं करते. We are not, anybody else is not giving any input, but the reaction of the process is going on its own. So जब भी एक spontaneous process होगा तो उस केस में delta S will always be greater than 0. So this is one of the very important point because इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में वी आर इंटरेस्टेड इन द स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, कि कब हम ऐसे कौन सा सिचुएशन में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंट्रोपी पार्ट विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड देन अदर इज दिस नोड पॉइंट दैट डेल्टा एस is always greater than 0 for a spontaneous process. Now one more point if you want to add up कि जो हमारा Q होता है that we can also sometime represent it with a delta H, but at this time our Q should be at a constant pressure. So अगर same चीज that we are finding the change in entropy at a constant pressure, so instead of taking heat Q we can directly take enthalpy delta H and the equation will become delta S is equal to delta H by T. So that's all for the entropy part. So let's start with the name of the topic, which is our Gibbs free energy, or simply it is called as Gibbs energy, and it is represented by G. Okay. Now what do we mean by Gibbs energy? पहले तो देखते हैं Gibbs energy का concept आया कहां से. So जैसा कि हमने देखा है, like the main aim of a thermodynamics is to find the characteristic in which we can define a spontaneous process. कि ऐसा क्या चीज है जिसको हम देख करके बता सकते हैं या उसके regarding में we can say that this process is a spontaneous process. So actually we started this thing by the enthalpy of the reaction, that is delta H. So it was found that whenever we are having a negative enthalpy, so that means our reaction will be spontaneous in nature. But again, it was seen that it was having certain exceptions. For example, formation of SO2 and so on. So, वो cases में it was showing exception that although formation of SO2 was endothermic, but still it was spontaneous reaction. So that is why we cannot proceed ahead with the help of enthalpy of system. So उसके बाद जो second term आया, which was used to measure the spontaneous nature of reaction or spontaneous nature of process. So that was entropy. So entropy was like कि जब भी entropy of the change, that is when we are changing from one physical state to another physical state, जब भी it is more greater than 0, that is it is positive.
तो उस केस में हम कहते थे कि दैट द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, बट अगेन उसमें भी देयर वाज सर्टेन एक्सेप्शन, सो दैट इज व्हाई अगेन वी वर नॉट एबल टू मूव अहेड विद द एंट्रोपी पार्ट. And finally, we took Gibbs free energy, which is actually a combination of entropy as well as the enthalpy change. So यहाँ पर हम पहले लिख सकते हैं like the Gibbs free energy is made from the combination of G is equal to H minus T into S. ठीक है. So this is actually our Gibbs energy concept, that it is actually considering both the things, enthalpy as well as the entropy, but at a particular temperature. Now, if you want to calculate the change in Gibbs energy, so definitely we have to take delta G, and which will be equal to delta H, and minus, again this temperature has to be constant, so it will be T, but the entropy can vary. So that is why here it will be delta S. So this is actually our very important equation. In fact, one of the very important equation in our entire syllabus, which is delta G is equal to delta H minus T delta S, which is Gibbs energy is the difference between the enthalpy and T into delta S of the system. Okay, so this is how we can represent our Gibbs change in Gibbs energy. अब इसमें हम spontaneous nature explain कर कैसे पाएंगे? So we have three cases. So let's say case number 1, when delta G is greater than 0. Okay, that means delta G is positive. So in this case, our reaction will be non-spontaneous. Okay, whenever delta G is greater than 0, it is positive. That means the reaction is non-spontaneous in nature. Then second, we have it as delta G is less than 0. That means it is negative. और ये case में the reaction is spontaneous in nature. And third, we have it as delta G equal to 0 and the reaction is at equilibrium. So these are our three values that we can have it as delta G. Delta G का सिर्फ तीन ही वैल्यू आ सकता है, या तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या एक्जैक्टली इक्वल टू 0 होगा. So whenever it is positive, तो the reaction or the process is not spontaneous in nature. जब delta G का वैल्यू नेगेटिव आएगा, जब delta G का वैल्यू नेगेटिव आएगा, so the reaction will be spontaneous in nature. This is very important because we are mostly interested in the part where we can find out the spontaneous nature of the reaction. So the second relation, that delta G is less than 0, is important part, and then delta G equal to 0, it will be at equilibrium condition. So let's write here a note point, like let's say note. Here we can say at equilibrium, since delta G is equal to 0, so this implies that हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ, जो बॉक्स में हमने लिखा है, it will become 0 is equal to delta H minus T delta S. So can we say this says negative part को left hand side में ले लेते हैं, that T delta S is equal to delta H and T is equal to delta H upon delta S. And actually if you see this temperature, since this temperature is taken at equilibrium, so this is called as equilibrium temperature. ठीक है, so this is one of the important temperature while we are calculating like delta G. So ये टेम्परेचर का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी अब आगे देखेंगे साइन कन्वेंशन में कि जहां पर ये टेम्परेचर पे हमारे दो इंपॉर्टेंट कंडीशन डिपेंड करेंगे. सो द टेम्परेचर विच इज टेकन एट द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एंड एट इक्विलिब्रियम वी विल गेट दिस इक्वेशन एज T equilibrium is equal to delta H upon delta S. So this is our equilibrium equation for Gibbs free energy. Okay. Similarly, we can write this Gibbs energy in another form also. Let's see that one in terms of equilibrium constant K. So let's see that part also. So all right, let's see the delta G value, delta G in terms of K, equilibrium constant K, capital K. So the equation is like delta G is equal to delta G naught plus RT ln capital K. That is R universal gas constant, T is the temperature at which the change is taking place, and log to the base E equilibrium constant K. Now the same thing we can write in terms of log base 10 also. So we can say like delta G equal to delta G0 or G naught plus 2.303 RT log to the base 10 K. ठीक है, और जैसा कि हमने देखा था अगेन इसमें भी तीनों कंडीशन सेम होंगे, दैट डेल्टा जी व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 इट विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन,
or the process. Then if delta G is less than 0, then it will be a spontaneous process of the reaction. And when delta G is equal to 0, the reaction or the equation is that process is at equilibrium. So let's write again this equilibrium equation. So let's see, at equilibrium we know that delta G is going to be equal to 0. So our above equation will be equal to 0 is equal to delta G naught plus 2.303 RT log to the base 10 K. And this implies that delta G naught is equal to minus 2.303 RT log to the base 10 K. Okay. So actually here we can calculate the standard Gibbs energy of the particular reaction or the particular process. And ऊपर वाला जो ये equation है, this equation, there here we can use the normal like Gibbs free energy at a particular condition. So ये दो हमारे इक्वेशन है गिब्स एनर्जी के. एक था डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S and the second one is delta G is equal to delta G naught plus 2.303 RT log to the base 10 K. Now, apart from these two, we have one important sign convention here that we need to consider because वो sign convention से just by looking at the equation delta H और delta S का value देखकर हम बता सकते हैं कि reaction considering the temperature also हम बता सकते हैं कि value अगर negative आ रहा है positive आ रहा है तो कौन से conditions में वो spontaneous होगा, कौन से conditions में वो non spontaneous होंगे. So let's see that sign convention. So let's see about the sign convention which is used to determine delta G value. So with the use of this sign convention, we will be able to find out कि delta G हमारा कौन से conditions में negative हो सकता है, कौन से condition में positive होगा. In short, when it can be spontaneous and when it can be non-spontaneous in nature. So let's see, let's write this as let's say अगर delta H का value हमारे पास negative है, so and we have this delta H as positive value. ठीक है, लेट्स राइट दिस एज अ रेफरेंस इक्वेशन. एक यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ठीक है, अब हम इसको रेफर करके हम देखेंगे कि हमारा डेल्टा G का वैल्यू आ क्या रहा है. सो लेट्स सी, फर्स्ट वी आर टेकन हियर डेल्टा H इज नेगेटिव एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव, सॉरी डेल्टा S इज पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल नेगेटिव ओनली. So ये पार्ट है और ये यहाँ पर ये पार्ट है. So overall we can say this one is negative and this one also will come as negative only. So overall negative and negative, delta G will be negative only and it will be spontaneous at all temperatures. ठीक है, so it doesn't matter what the conditions is. अगर हमारा delta H negative है, delta S is positive, definitely all the time delta G is going to be spontaneous in nature. Now let's consider another sign that here it is negative, then delta S is also negative, and here let's compare this one. Okay, so अभी ये केस में अगर हम कंपेयर करते हैं that delta S का वैल्यू like let's say delta H is negative, मतलब ये हमने यहाँ पर delta H ऐसा लिख लेते हैं delta H minus T delta S, इसको हम erase कर लेंगे. So here it is, we are taking it as negative and here it is already negative but multiplied by minus sign. So can we say this overall thing will become positive and this is negative. So when we are comparing this thing, delta H अगर negative है, delta S अगर negative है, तो ये केस में हमारा जो G का वैल्यू है वो negative भी आ सकता है, वो positive भी आ सकता है and it depends upon the temperature. ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे होगा. So let's see the first case कि delta H is negative, delta S is negative and when this is also coming as negative, so that means what, our overall value कि अगर आप यहाँ पर check करोगे delta H is negative part और minus into minus करेंगे, so T delta S will become positive. So definitely this will be spontaneous, but इसके लिए हमको एक condition चाहिए होगा at a lower temperature and here the temperature lower equilibrium temperature. So this will be spontaneous at lower temperature और यहाँ हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं that our temperature T should be less than our equilibrium temperature. So in this case we can get this as negative value and the reaction of the process will be spontaneous in nature. Second is let's say both are negative and we are getting the value as positive. So that means what, हमारा T delta S का पार्ट है, that is the positive part is greater, तभी जाकर हमारा delta G का वैल्यू भी बड़ा होगा, वो पॉजिटिव होगा. So in this case when the overall value is coming as positive,
So we know the reaction will be non-spontaneous, and this will be non-spontaneous at higher temperature. So your जो ब्रैकेट में हमने ऊपर लिखा हुआ उसी का रिवर्स करना है हमको. The T should be greater than T equilibrium. So this will be our two negative values का, एक negative आएगा एक positive आएगा. Now let's see for the same positive signs also. Let's say अगर ये हमने positive लिया and here also we are taking it as positive. So again अगर आप डेल्टा H को पॉजिटिव ले रहे हैं then it is okay, but जैसे हम माइनस टी डेल्टा एस में डेल्टा एस को पॉजिटिव पुट करते हैं so overall टी डेल्टा एस will become negative. पहले वाले केस में जब दोनों ही पॉजिटिव है तो डेल्टा एस विल बिकम नेगेटिव दिस वन, एंड दूसरे केस में जैसे दोनों ही पॉजिटिव है डेल्टा एच डेल्टा एस तो वो केस में दिस विल बिकम पॉजिटिव. सो लेट्स सी that when it is this negative that means it is spontaneous, but it will be like हमको t delta s का value it should be greater than delta h. So spontaneous at a high temperature, and again we know which temperature we are comparing. Here we are comparing T should be greater than T equilibrium. Okay. Then next is T delta H positive, delta S is positive, but still the equation is coming as positive. मतलब delta H वाला value यहाँ पर हमारा बड़ा है. So अगर ये overall positive आ रहा है, so it will be non-spontaneous, and this will happen at a lower temperature. Okay. And here we can compare like T should be less than T equilibrium. And finally we have one last condition, that is when we are having this as positive, this as negative, and the value is coming as positive, and this will give you the always it will give you like this one will be positive and T delta S will also become positive. So there is no chance of getting the negative part, and we can say it is non-spontaneous at all temperatures. ठीक है. So this is our like sign convention part, जहां पर हमको टोटल 6 different conditions are given, और ये साइन कन्वेंशन से हमको ये आइडेंटिफाई करना कि कौन से कंडीशंस में वो स्पॉन्टेनियस होगा और कौन से साइन कन्वेंशन में या कौन से साइन की कंडीशन में इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर. So that's all for the last part of the chapter guys. Now we are remaining with एक लास्ट में छोटा सा हमने जो लॉस है थर्मोडायनेमिक्स के वो देख लेते हैं, and then we are done with the chapter. So let's write our second and third law of thermodynamics that we are not seeing. So the second law of thermodynamics is the entropy of the universe in a spontaneous process. The entropy of a universe is always greater than zero. So here we can say, let's say for a spontaneous process, entropy of universe that is S total is always greater than zero. Okay, so this is our second law of thermodynamics. And finally, similarly, we have third law also. And third law is like the entropy delta S is equal to zero at absolute zero temperature. So what do you mean by absolute zero temperature is, that is यहाँ पर हम लिख सकते हैं it is 0 Kelvin, or we can write it as minus 273 degree Celsius. So the delta S of the system, यहाँ पर हम लिख सकते हैं let's say delta S of system is zero at absolute zero of temperature, that is 0 Kelvin or minus 273 degree Celsius. Okay, so these are the two laws, that is second law and the third law of thermodynamics, which are related to the entropy part.